नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम जो हमारे एसकेएम योगा के तत्वाधान में चलाया जाता है और पिछले 3 अनवरत वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। योग दिवस के 100 दिन पूर्वत हम लोग ये कक्षा शुरू करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग करीब 200 दिन पहले ही ये कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। जैसा मैंने आप सभी को बताया है, आज हमारे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर प्रसाद सर हैं। आपकी विद्वता न केवल भारत अपितु विश्व का कोई भी ऐसा महादेश नहीं है जिस महादेश में सर का वक्तव्य ना हुआ हो। अभी सर जल्द ही ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं और जैसे ही अभी मुझे पता लगा कि एक दिन पहले ही सर का आगमन हुआ है और आने के अपने इस व्यस्ततम शेड्यूल में से हर बार मेरे अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए योग समाज सर आपका सदा ऋणी रहेगा। अभी धीरे-धीरे छात्रों का समूह जुड़ता चला जाएगा और करीब-करीब 50 से 60 बच्चे जो हैं वो आपको इस कक्षा में सुनेंगे। इस कक्षा में इस बार का प्रारूप हमने ऐसा रखा है, पिछली बार क्या होता था, हम लोग लाइव बोला करते थे, तो लाइव में प्रश्नों की श्रृंखला उतनी नहीं आ पाया करती थी। इस बार हमने जूम पे रख दिया तो लोग अपने प्रश्नों को भी पूछ पाते हैं, प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं आपसे। तो कुल मिला-जुला के आज की जो कक्षा है वो ऐतिहासिक कक्षा इसलिए भी है क्योंकि जिस विषय के विद्वान हैं आदरणीय सर, ऐसे विषय के विद्वान यदाकदा मिलते हैं हमें देखने को। ये जो मर्म चिकित्सा है, भारत में बहुत लिमिटेड लोग हैं। अब इस विषय पे अभी सर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, परंतु जितने भी लोग हैं, उनमें से सर एक श्रेष्ठतम विभूति हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत है सर। मंच आपका है सर। धन्यवाद डॉक्टर शिवम मिश्रा। और सबसे पहले आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जो लोग यहाँ जुड़े हैं एसकेएम से, उन सब का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कई बार शिवम के पोस्ट्स देखता हूँ, तो उसमें बड़े एक्टिविटीज और डिफरेंट प्लेसेस में इनकी भी बहुत चलती रहती है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड डॉक्टर शिवम विथ योर वर्क। और ऑल्सो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स बेसिकली हमने देखा कि आपने बहुत अच्छा काम किया था, तो आई विल ऑलवेज रिमेम्बर इट। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रेजेंट माय टॉक हियर। Is it okay if I speak in English or do you want me to speak in Hindi? सर दोनों ही उचित है। जनता हिंदी भाषी भी है और अंग्रेजी भी है, तो अगर आप दोनों भाषाओं का प्रयोग करें तो उचित होगा। Okay. Okay, doctor. You have to allow me to share my screen for the presentation. Sure sir. Just wait. Thank you. Yes sir, now you can share sir. Okay, thank you. Now I'll be talking mostly of the global outreach of Marma Chikitsa. And of course, yes, Dr. Shivam ne bola, recently I visited in Australia, so I'll talk about that as well. So this is a case of frozen shoulder, which we treated in Cancun in Mexico. So now I can. So this is before treatment. So this patient is not able to completely lift the limb, left upper limb, and this is before treatment. So yeah, as you see, इसमें काफी painful था और उसके facial expression से पता चलता है. Now the other side, like this, you raise it like this. So it's not more than 90 degrees and still a lot of pain. She says that ऐसा लगता है कि बहुत dragging pain हो रहा है उसमें.
This is before doing the Marma therapy, or the next video hai, this is after it. Very comfortable. I don't feel pain. Yeah. Look, I can do it. I don't feel any pain at all. I don't feel any, because I feel like something was pulling me back, my nerve, or I don't know, but I don't feel any pain. So now she says after doing it that she's not feeling any pain after doing the Marma therapy. Okay. And here It's like also, when you go to the gym. Yeah. Well, look, I can move it. Yeah, I can move it more. the degree of range It's of not- movement, yeah, improve. Not like this. But I understand because we just do it. Look, see, but I can move it. So this is in the after first sitting of Marma therapy, and this is another case of frozen shoulder in Cancun. If you can see the facial expression, इसका भी range of movement changing था. Different times in Cancun, not the same day, different times in a lot of same. Okay. Basically he's German, and he had this problem for 6 months. उसको लगता था कि कभी ठीक नहीं होगा. फिर उसको बाद ट्रीटमेंट करने के बाद ये सेम डे का वीडियो है. आप इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे तो काफी रिलैक्स्ड है और इसका रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड 25 to 30 डिग्रीज बढ़ गया है. ये आफ्टर सेम डे, कपल ऑफ सिटिंग्स ऑन द सेम डे, ये रिस्पांस है इस पेशेंट पे. So here also the degree range of movement has improved. और सेम पेशेंट को हमने वहाँ सिखा दिया था कि किस तरीके से मर्म चिकित्सा करनी है, सेल्फ मर्म थेरेपी. तो इसने बड़े अच्छे से रिलीजियसली इसको फॉलो किया और ये नेक्स्ट वीडियो करीब 1-1.5 महीने बाद इसने हमें भेजा. तो ये उसका नेक्स्ट वीडियो. So almost all his range of movement returned, as you can see. Okay. So this actually also showed that we can get very good results and quick results, and of course the best part is हम लोग इसको सिखा भी सकते हैं और लोगों को खुद से करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन उसको सिखाया जाए तो फॉलो किया जा सकता है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर यूनाइटेड नेशन इंटर्न्स एंड फेलोज. दिस इज द ओनली एनजीओ व्हिच इज बेस्ड इनसाइड द यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क. And इसमें प्रोफेसर वैल्डेमर प्राडो is a very good scientist, उन्होंने इनवाइट किया था, and we had very good interactions regarding Marma therapy there as well. यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन में भी एक टॉक हुआ था नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, and this is the recent visit where we had good discussions with the Consul General. He's the Consul General in Melbourne, and is the Honorable Consul General in Perth. He's the Honorable Consul General in Melbourne. So we had good discussion regarding Ayurveda, yoga, and Marma Chikitsa in the Indian Embassy Consul Generals there. And we had very good sessions with the naturopaths. So you did all the naturopaths, and also one of the very important dentists, good dentist. He was there. We attended our workshop. So they were all quite happy because some of them had already been doing, because they had attended my workshops online once earlier, but yes, they wanted to do it more hands-on. So they came, and there are some of the ones practicing for more than 20-25 years in naturopath fields. Then this was in Perth, and I should name Anne, who invited me, and I'm thankful to her for inviting me in Melbourne. And Dr. Santosh Yadav, he is the director of this Ayush Information Cell
in Australia. And this is Ayush Information Cell as of the Ministry of Ayush. And he's one of the leading persons. He's doing wonderful work in Ayurveda in Australia. And also some of the very good works. He has made some very good products, Ayurvedic products, which is TGA approved. That is the regulatory body of these medicines in Australia, and getting it approved is not an easy task. So he along with Dr. Gurnam Saini and I think one or two more people, they have made this available for general public, and I was happy to see those products there, and it can be taken by common public also, since they are the TGA approved drugs. So yes, Dr. Santosh Yadav came there, and we had good discussions regarding Marmas there as well. And here, as you can see in Perth, Kareen was the one who invited me from Lakshmi Ayurved, and she's also been doing wonderful work in Ayurved in Perth. And we had a number of participants, I think around 25 participants from different parts of Australia. And as far away as like 3 to 4 hours flight journey the people took to attend this workshop. I was really honored to be there, and I'm again thankful to hope of Ayurveda, and people are really interested abroad to know more and more about Ayurveda and Marma therapy, and of course yoga. We all know is everywhere. This is an Indian embassy in Tel Aviv. Ofra had invited me, and we had a few sessions there. And this is an Indian embassy in Tel Aviv. Again, one of the best hospitals there, Tel Hashomer. And Tel Hashomer is considered one of the best, not only in Israel, but I think one of the best in the world. And we had a good discussion regarding post-trauma stress disorder. And one of the patients, they wanted me to show live. And so I did it on this patient live in front of all the very good doctors present there. And yes, when they saw the effect, they were quite impressed, because the patients had difficulty also in walking. And he was able to put more weight on the limb after doing the Marma therapy, and his walk improved actually. I did say that you have to follow it up afterwards, not like only one sitting will do, but you have to follow. But yes, they did it, and he actually showed good effect after the Marma therapy. Then we had very good sessions in Indian Embassy in Hague, and also the Indian ambassador, honorable ambassador, was there. So this was in Poznan in Poland. And recently, in government of Nepal is organizing different batches of doctors being trained into Marma science, and I've already completed around 6 batches of training all the government medical officers of Nepal, and also the paramedics. So others have already trained. They are also training the other doctors as well as the paramedics. And this is the Honorable Health Minister there, and Dr. Ramadhar had invited me, and the director there, and we had very good discussions there as well. This is in the yoga class in Rishikesh, as you can see. We had a lot of people, and we had a very good session. From the yoga practitioners. Vishnuji was the one who invited me there. This is a case of lumbar canal stenosis being treated by Dr. Hiren. He is one of my students in Gujarat, and one of my students in Marma, basically a PhD scholar of another doctor.
in Gujarat. But in Marma's, yes, he had attended some of my advanced Marma courses, and he practiced it in some of his patients. And this is really very good to see that you see the patient is still suffering with lumbar canal stenosis, but at the time of first MRI, that is on 19 March 2021, he had this anterior-posterior diameter as 4.6 millimeter of the spinal canal, right? And then here, after approximately 1.5 years, you can see that the diameter is increased, that is 6.5. That means there is less compression. And even in the MRI, they are writing here, regression in compressive element over left exiting nerve root at L4-5 level, regression in compression over thecal side. So there's actually a regression, which is quite difficult to obtain in cases of lumbar canal stenosis. Of course, there was some medicines also given to the patients, but mostly Marmas were practiced by Dr. Hiren, and Dr. Hiren maybe I will ask him later to share more about his case once he's ready to publish it. So yeah, the people who are doing it, learning science of Marma and practicing, that is the best and most satisfactory part for me, because we can reach so many people who actually need the application. As you see, this is a non-pharmacological intervention, non-invasive method of treatment. So the adaptability and the acceptability is much more. This again, a case of tennis elbow, which we treated in Singapore. Early part of this year, when I had a very severe tennis elbow, and even with the regular physiotherapy guys, that I was introduced to this session, and I happily went, thinking that I would be able to heal myself and others as well. And I was really thankful that I was actually healed of my tennis elbow problem. So tennis elbow we treated, and yeah, were non-responsive to some of the other treatment protocols, or to a lesser extent. But after doing the Marmas, we had very good effect, and now she's cured of this tennis elbow. We have done a lot of webinars, and one of the webinar, I was quite surprised, 700 people, including many doctors, joined, and it was only very short time that we announced. And one, there were around 700, then another one, there were 600 or more. So it was quite good to see the people from all parts of the world getting more and more interested into Marmas. Now, what is Marma? So as per Acharya Sushruta, it is defined as Marmani nam man sirasnayu asti sandhi sannipata teshu subhaveva pranaha tishtanti. So Acharya Sushruta has defined Marmas as the anatomical site where man, sira, snayu, asti, sandhi unite, and by nature, prana resides here. And since they have mentioned about prana, so here prana is a plural word. So prana is to be considered not just as a prana vayu, but it is the Dwadash prana, which is mentioned by but the Ayurveda, or mentioned in the Ayurveda Samhita. But Acharya Vagbhat has also said, besides this, that the site where abnormal pulsation is found on pressure with pain can also be considered as Marmas. So this is the concept of Acharya Vagbhat. And we have utilized this concept also in treatment of some of the diseases. Marma by word means something which is very sensitive, and even in Hindi, जब हम लोग कहते हैं कि मर्म स्थान को मत छेड़ो, so this is something which is very vital, very core of something, right? So we have to be very careful about Marma. This is what we have always learned in folklore. So what is Marma therapy? So Marma therapy is the art of stimulating the Marma points exactly at the right time, place for rechannelization of energy, yielding better energy flow and optimum therapeutic effects at physical, psychological, and spiritual levels. Again, so some of the basic references comes in Varmam, by the word Varmam in Rig Veda, where the term Drapi has come. In Atharva Veda, also the similar term Kavach has mentioned. And since the term
Varmam has been mentioned in Rig Veda. We consider that this is the oldest form of science or knowledge known to mankind. It has also been mentioned in various Ayurvedic Samhitas, Sushruta Samhita, Charak Samhita, Ashtanga Sangra, Ashtanga Hriday. So, now coming to the relationship between Marma and yoga, because I believe there are yoga practitioners here. So it is mentioned, Ashtadasheshu Marmasthaneshu Kramat Dharanam Pratyahara. It means that on 18 Marma sites, we have to do the Dharan Kriya, and that Dharan Kriya is called as Pratyahara. This is in Shandilya Ushad. And similarly, in Vashishtha Samhita, it is mentioned, Pratyaharam Prashasanti Samhita Yogina Sada Ashtadasheshu Yad Vayor Manusthaneshu Dharanam Sthanat Samkrishya Pratyahara Sacha Uttama. So here again, they're also saying one by one, you do the Dharan Kriya, 18 Marma sites, and that the Dharan and Dhyana on 18 Marma sites, you're doing the process is called as Pratyahara. And nowadays we come across the term about the Yoga Nidra. And basically in Yoga Nidra also what you're doing is you're trying to regionalize or concentrate your focus on mostly the Kundalini and then going upwards towards the Sahasrara. Right. So that concept has actually come from these shlok where it is mentioned regarding this Pratyahara. Ashtadasheshu Marmasthaneshu Pramata Dharanam Pratyahara. Right. So there's quite a deep relationship between Marma and Yoga. So what are those 18 Marma sites? So these are the Marmasthan as mentioned by the Vashishtha Samhita, like Pad Angushta. So similarly, corresponding to the Pad Angushta, we have the corresponding Marma as Chipra. Gulf is the same as mentioned in the Samhita, Vashishtha Samhita. There, Gulf corresponds to this same which is in Ayurveda as well, right? Similarly, Pindika Madhya. So instead of Pindika Madhya, the corresponding Marma site is the Indravasti. Similarly, regarding Janu Mool and Janu, we have the same Marma, which is the Janu. Then Uru Madhya. Uru means near the femur bone actually, and then Madhya means central region. So Urvi is the Marma site. Urvi is the Marma which lies most in closer proximity to Uru Madhya. Then Payumul can be correlated with Guda or anal region. Then Deh Madhya can be correlated with Basti. Then Linga can be correlated with the Vitap Marma, Nabhi with Nabhi, Hriday Madhya with Hriday, Kantakup with Nila, Manya, and Sira Matrika Marmas, Jiva Mool with Shingatak, Nasa Mool with Fana and Shingatak, Netra Pradesh, so Apang and Avarth, Bhumadhya, in between the Bhumadhya we have the Marma which is the Sthapa, then Lalat we have the Avarth, Uchep and Shankha, then Brahmarand corresponds to the Adipati. So how beautifully the different Marma Sthan are correlated with the corresponding Marma sites, and doing this Dhyan Dharana Kriya on those Marma sites is the process of Pratyahara. Now, and also there's close relationship between the Marma, Chakra and the Nadis. There are 3 levels of energy centers that link the body to the mind and higher consciousness, the chakras, the Nadis and the Marmas. The chakras are the energy centers of the subtle body that are located along the spine. And we all know this. I don't need to expand upon this. I think as you can see, Mru Manin Jeev Sthane, Sandhi Sthane, Tatparya Chiram. Here, Ma means Pran or Vayu, and Rev denotes house or seat. So, the seat or the house of Pran is the Marmas. However, Sushruta has mentioned Maryanti iti Marmani. That means if there is severe injury on the Marma side, then it can lead to even fatality. So this is one of the reasons why people were quite skeptic about touching the Marmas for therapeutic effects. And this is one of the common questions I was asked to when Sushruta and other Sangitas have mentioned that Maryanti iti Marmani, then why are you touching the Marmas?
So the answer to that is that, see, in everyday life, you are in one way or the other touching different marmas, but it's not causing any fatality. When the acharyas have mentioned about Mariyanti Ti Marmani, then that means that if there is severe injury on the marma, then that can be fatal. And we all know Hridaya is a marma, severe injury on heart can lead to fatality, but only touching or rubbing or doing abhyanga or putting an or Hridaya basti or just gentle touch will not cause any injury. Actually, it will be produce therapeutic benefits as well. And similarly, when you do Shiro basti, when you do Shiro dhara, there are certain marmas which get influenced, but it do not cause any injury, but rather get benefits. Of course, the oil and the other medicines which are used for that have their own therapeutic effects, but the stimulation of marmas also have the therapeutic. And by doing the stimulation, we do not cause any fatality. However, we are producing or we get therapeutic benefits. And of course, we will have to be very careful in the sense that since they are sensitive points, they are the seat of prana, we should be careful not to injure the other parts by not exerting extra pressure. So how much pressure that you need to apply, what direction the pressure you need to apply will vary from marma to marma, and that knowledge has to be there, because then only you will be able to better become a marma practitioner. There's a lot of description about marma in Siddha science as well. And again, Agastya Muni is considered as the father of Siddha. And the reference of Agastya Muni also comes in Charak Samhita, first chapter, where there are 53 acharyas who learned the science of Ayurveda. And among them, one was Agastya Muni. So it could be that they are contemporary and two parts of the same coin. So that has to be probable mechanism of action based on energy concept, based on Tridosh, based on some of the modern parameters. Since this is an energy healing technique, I will be talking about the energy concept, but of course, when you know about the involvement of the different marmas and their corresponding Tridosh in Ayurveda, then we will be able to physiologically expand the use of Marma Chikitsa in various fields. This is a very famous experiment by Professor Korodko, where we all know that we emit certain kind of energy radiation, but how to quantify it, how to bring it on black and white paper. So this was a very important research carried out by Professor Korodko and the team in St. Petersburg University in Russia, where they designed a camera which is called a Skirinian camera and mapped the energy field of a water droplet, and then asked an energy healer by the name Alan Schumer to do 10 minutes of conscious concentration on the water droplet. So this energy healer did the meditation and conscious concentration on the water droplet, and the energy field after doing this was mapped again. And you can see this, yes, they are saying the difference in the bioenergy glow is dramatic. The biocharged water has more than 30 times stronger aura vibration and significantly altered physical and biological properties, right? So this is quite a very, very important one, because we are 70% water molecules. So if you can change the energy field of water, you can change human bioenergy field as well. And based on this, there have been several other experiments carried out as well, including some of the meta-analyses. These are some of our papers and published in reputed journals: pattern identification in thought form images, clinical evaluation of monotherapy in Bahu. Then, yes, one of the very good doctors, Dr. Raman and Dr. Santosh, doing good work in Government Ayurvedic College in Patna, and they have also trained many other doctors in marmas. So it is really good to see people from different places learning it and practicing it first, and then bringing the knowledge down further to other students. So now just coming to some of the points description, which we can do in cases of cervical neck pain and frozen shoulder patient. So basically we do these 4 marmas, the Ans, Kurpar, Kakshadhara and Chipra.
I'm just going to explain in brief about them. It is a snayu or a vaikallik or marm. So snayu means ligamentous or tendinous. Size is ardhangul. And this is the site जहाँ पे neck join करता है shoulder से, उससे लगभग 2 finger breadth नीचे. तो we use the index finger and the middle finger for doing this stimulation. बेसिकली जब हम लोग मर्म चिकित्सा करते हैं फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल नेक पेन में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अप एंड देन वी गो डाउन. The direction of pressure for the ans marm is from the point of stimulation towards the sternal notch. यहाँ जिस पॉइंट से हम लोग इसको स्टिमुलेट करेंगे वहां से एक इमेजिनरी पॉइंट बनाएंगे एंगल अपने यहाँ पे, और उस एंगल पे इंटरमिटेंट प्रेशर से. ज्यादातर जो मर्म है वो जो कि नॉन वैस्कुलर, मतलब जो सिरा मर्म नहीं है, वो 20 से 25 बार एक सेटिंग में स्टिमुलेट करते हैं और दिन भर में 2 से 3 बार करते हैं. 2 to 3 times in a day, 20 to 25 times in one sitting. Press and release in the same rhythm in which we take our breath in and out. जिस तरीके से सांस लेते छोड़ते हैं उसी तरीके से इसको प्रेस करना है. बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बहुत स्लोली भी नहीं. जो ये जो 4 मर्म है, none of them are vascular. So जो नॉन वैस्कुलर है या जो नॉन सिरा मर्म है उसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया जा सकता है. कोई सेट रूल नहीं है कि किसी मर्म को स्पेसिफिक कि हाँ सब मर्म पे यही करना है, बट जनरली स्पीकिंग जो नॉन वैस्कुलर मर्म है उस पर प्रेशर एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा सकते हैं. अगर सर्वाइकल नेक पेन है तो उसमें हम लोग 3 मर्म जनरली करते हैं, बोथ साइड्स का, अंश, कूर्पर और छिप्र. और अगर फ्रोजन शोल्डर है, अगर सिर्फ एक साइड का फ्रोजन शोल्डर है तो अंश, कक्षधर, कूर्पर और छिप्र, ये 4 करते हैं. सर्वाइकल नेक पेन में ही अगर पेन रेडिएट करता है ऑक्सिपिटल रीजन में, सर के पीछे की तरफ अगर रेडिएट करता है पेन, तो देन वी आल्सो इंक्लूड वन मोर मर्मा व्हिच इज कॉल्ड एज द क्रिकाटिका मर्मा. आई हैव नॉट शोन इन दिस फिगर. सो सेल्फ स्टिमुलेशन टेक्निक है कि अपने शोल्डर एल्बो को स्लाइटली फ्लेक्स करना है or approximately make 30 degree with the mid axillary line. So if this is the mid axillary line, you make 30 degree angle and keep it close to the chest, and then place 2 fingers in the back, right? And the point at which you go like this, थोड़ा सा जब ये करेंगे थोड़ा इंटरनली मूव करना है. इसमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल नेक के क्लोज नहीं आना है ना, बिल्कुल नेक के पास नहीं आना है. और इस तरीके से करते हुए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जनरली लोग करते क्या है कि इसको ऐसे दबाने के चक्कर में आगे की तरफ ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है. तो हाथ को इसको फिक्स करना है और सिर्फ आगे वाला ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, लास्ट पार्ट को बेंड करना है, कोशिश करनी है. थोड़ा सा ये फिंगर मिडिल में भी बेंड होगा, लेकिन कोशिश करना है कि सिर्फ लास्ट पार्ट फिंगर का मूव हो. पूरा ऐसे फिंगर मूव नहीं करना है. ऐसे मूव करेंगे तो जो डायरेक्शन प्रेशर होगा वो फॉरवर्ड आ जाएगा, मतलब यहाँ से आगे की तरफ, इस तरफ आ जाएगा प्रेशर. तो हमें क्या करना है कि इस तरफ, सामने की तरफ बिल्कुल प्रेशर न लाकर प्रेशर का डायरेक्शन हमें यहाँ रखना है. तो इसीलिए बाकी फिंगर्स को क्लोज रखना है, केवल 2 फिंगर को ऐसे यूज करना है. और इसको बेंडिंग जो है सिर्फ लास्ट पार्ट का, जैसे हम आप देखोगे अभी कर रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके से प्रेस करना है इंटरमिटेंटली 20 to 25 टाइम्स in one sitting. और ऑल्टरनेटिवली दोनों एक साथ नहीं करना है, एक एक करके करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज द कक्षधर मर्म. ये भी स्नायु जैसे लिगामेंटस और टेंडनस है. 2 मर्म पॉइंट है दोनों शोल्डर पे, एंड लोकेशन है 2 फिंगर ब्रेड्स इंफेरोमीडियल टू द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. जहां क्लेविकल जॉइंट करता है एक्रोमियम से, तो ये वाला पॉइंट कहलाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर पॉइंट. और इस जैसे ये वाला पॉइंट है, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर पॉइंट, और इससे लगभग 1.5 से 2 अंगुल नीचे, 1.5 to 2 फिंगर ब्रेड्स बिलो इज द साइट ऑफ द कक्षधर मर्म. अब इसमें ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर है वो बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स होगा.
इसको, इसमें जो प्रेशर है कभी भी नीचे की तरफ नहीं लगाना है, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ से इंपॉर्टेंट वेसल्स एंड नर्व्स क्रॉस कर रहे होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर है वो बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स होगा। जो फील आएगा पल्प ऑफ थंब पे, सो दिस इज द पार्ट व्हिच वी यूज, सो वी विल हैव अ स्लाइट बोनी प्रोमिनेंस फील। तो ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, इसका जो सर्कुलर प्रोमिनेंस फील होगा फिंगर के एक साइड में, ठीक है। और अगर आप जब ये प्रेस कर रहे हैं आपको बिल्कुल सॉफ्टर फील आ रहा है, तो मतलब आपने गलत जगह पे चले गए हैं और आपको वेसल्स को इंजर कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट फील नहीं आएगा, एक ग्रूव जैसा आएगा। और अपवर्ड प्रेशर लगाएंगे तो हल्का बोनी फील और हल्का वो डिप्रेशन में फीलिंग आएगी इस थंब की। ये जो 4 फिंगर है पीछे में, दे आर ओनली यूज्ड फॉर सपोर्ट। Again, intermittent pressure 20 to 25 times in one sitting, 2 to 3 times in a day. अगर सेल्फ स्टिमुलेट करना है तो अपने आर्म को ऐसे रख के थंब जो है वो फॉरवर्ड यहाँ पे रखते हैं, जो डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में, और इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं। सो यू मेक 45 डिग्री एंगल, है ना। तो यहाँ से हम लोग जैसे आप देखोगे तो इस तरीके का एंगल बनेगा, बिल्कुल ऊपर भी नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से इस एंगलेटेड है। सो आप देखोगे ये इस तरीके से एंगल बना है, ठीक है। सो यू मेक अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री एंगल बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड स्लाइटली आउटवर्ड्स. Now coming to the next marma, which is the Cooper marma. Numbers are 2. Type is joint or sandhi marma. It's a vector marma. The size is 3 angul. It lies 1 finger breadth downward from the elbow crease, both on the medial as well as on the lateral aspect. तो इन फिगर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एल्बो क्रीज है, अगर एल्बो को जो क्रीज बनता है ये होता है एल्बो क्रीज, ओके। सो एल्बो क्रीज अगर फॉर्म किया और एक एंटीरियर मिड लाइन हमने अगर ड्रॉ किया, तो आर्म में एंटीरियर मिड लाइन ड्रॉ किया, तो इससे अप्रोक्सीमेटली मिड लाइन से 3 फिंगर ब्रेड्स मीडियली और 3 फिंगर ब्रेड्स लेटरली, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 3 फिंगर ब्रेड, और एल्बो क्रीज है उससे 1 फिंगर ब्रेड बिलो। ये जो एल्बो क्रीज है उससे 1 फिंगर। दिस इज वन साइड ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द कूपर मर्म। कूपर मर्म करने में फर्स्ट टाइम अगर स्टिमुलेट करें तो थोड़ा सा टेंडरनेस होता है, जैसे ये देखोगे इसमें और ज्यादा क्लियर है। ये एल्बो क्रीज है, दिस इज द, यहाँ से 1 फिंगर ब्रेड बिलो, सो दिस बिकम्स द साइट ऑफ स्टिमुलेशन। इसी लाइन को अगर हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ से डिस्टेंस जो है अप्रोक्सीमेटली 3 अंगुल प्रमाण होगा। अब जब अंगुल प्रमाण कह रहे हैं तो वो पेशेंट का अंगुल प्रमाण है या आपका नहीं है। हमेशा जब मेजरमेंट होता है तो वो जो पेशेंट है उसके अंगुल प्रमाण से होता है। अगर सेल्फ मर्म थेरेपी कर रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स आवर ओन फिंगर। सो दिस इज द मीडियल साइड ऑफ स्टिमुलेशन। सिमिलरली इसी तरीके से लाइन से ड्रॉ करके इस एल्बो क्रीज से 1 फिंगर ब्रेथ बिलो और इस मिड लाइन से 3 फिंगर ब्रेथ outside, so that will be the second side or the outer side or the lateral aspect of Cooper murm stimulation. So one by one we do the stimulation. So यहाँ पे जब आप एक बार point identify कर लेंगे तो यहाँ से approximately towards the olecranon. So this is the bony prominence है, ये olecranon कहलाता है। और यहाँ से you make an imaginary line from the point of stimulation towards the olecranon and applying intermittent pressure again 20 to 25 times in one sitting. ये जो Cooper murm stimulation है, it is tender when first stimulated. The patient has to be prognosticated. The patient has to be prognosticated that how much pain, or there will be slight pain when you do the stimulation, but it is at the time of the stimulation the patient will feel pain. It's not like always after doing it the patient will feel pain relief, right? So that is why we cannot just skip. इसको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो नॉजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, सेंसिटिव पेशेंट है, इसको लेट के करें। और डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल खाली पेट नहीं होना चाहिए, करीब 2.5 घंटा बाद, खाना खाने के 2.5 घंटा बाद या 3 घंटे बाद आप कर सकते हैं। So this is the medial side
side of stimulation and similarly on the other side. अगर यही चीज आपको self stimulation करना है तो olecranon process को से पीछे इसको रखते हैं और ये pulp of thumb इधर ऐसे पहुंच जाता है और यहाँ से हम towards the olecranon, इस तरीके से medial side of stimulation और inner side हो गया. अब ऊपर मर्म का अगर आउटर साइड भी करना है, जनरली अगर सर्वाइकल नेक पेन में है तो दोनों साइड ही करना होता है हमें, तो हम थंब को ओलेक्रानॉन प्रोसेस पे रखते हैं और 2 फिंगर ब्रेड्स आउटवर्ड्स. एल्बो थोड़ा सा फ्लेक्स होना चाहिए, पाम फेसिंग अपवर्ड्स. अगर ये पाम को डाउनवर्ड्स फेस करा करके तब आप मेजरमेंट करेंगे तो प्रॉपर नहीं होगा. तो पाम शुड बी फेसिंग अपवर्ड्स, एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स होने से मसल उतना स्टाउट नहीं होता, तो स्टिमुलेशन ज्यादा आराम से हो पाता है. तो इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं 2 फिंगर्स स्लाइटली टुवर्ड्स दी ओलेक्रानॉन. इधर से भी करेंगे तो अगेन एज यू कैन सी माय फिंगर हैज रीच्ड. ये तो केवल दिखाने के लिए मैंने ऐसे टर्न किया है, अदरवाइज आपको ऐसे रखना है ना. और इफ यू कैन सी नाउ दिस वन विल बी बेटर व्यू. सो यस, द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज लाइक दिस. थोड़ा सा यहाँ से इधर इस तरफ नीचे की तरफ. अगर पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन भी आपने सही खोज लिया और डायरेक्शन प्रेशर आपने अगर नीचे की तरफ लगाने लगे इस तरफ, तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा. और एक और मिस्टेक होता है कि अगर यहाँ से पॉइंट प्रेशर आपने ऊपर की तरफ लगाया थोड़ा सा जैसे इस तरीके से ऊपर की तरफ, तो भी उतना इफेक्ट नहीं आएगा. तो पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन से इधर तक आएंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं. एंड दिस हैज बीन थ्रू वेरियस क्लिनिकल observations and application on patients that we have seen this. Chipper Marma identification. So the next point, it is the 4th one, from the webbing approximately 2 finger breadths above, in the center or in between the thumb and the index finger lies the Chipper Marma. So इसका method of stimulation ये है कि हाथ को जिस तरीके से कोई आदमी ग्लास ऑफ वाटर होल्ड करता है उस तरीके से हाथ को रखना है और अपने इंडेक्स फिंगर को हुक जैसा बना करके इसको इधर थिनार एमिनेंस पे रखना है. इस तरीके से रख के और फिंगर को इस तरीके यहाँ पे थंब इधर से पहुंच जाएगा. थोड़ा सा स्लाइटली द प्रेशर है तो वो स्लाइटली टुवर्ड्स द थंब, थोड़ा सा प्रेशर साइड थंब के साइड में लगाना है. अगेन 20 to 25 times in one sitting, 2 to 3 times in a day, slightly towards the thumb. Okay, just like this. तो आराम से रिलैक्स पैनल में इसको किया जा सकता है. ये पॉइंट बहुत फेमस है, अदरवाइज इवन मेनी केसेस ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, हेडेक्स आल्सो ये पॉइंट करते हैं. So some of the qualities of good Marma practitioners: compassion, mantra and meditation, in-depth knowledge of anatomy, physiology and technique follows of Sadvit, being inquisitive, good observation, patience and practice. कई पेशेंट्स को हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं, बट कुछ पेशेंट ऐसे भी आएंगे जो तुरंत उसमें इफेक्ट नहीं आएगा. तो उसमें थोड़ा उसकी पैथोलॉजी पर डिपेंड करता है कि क्रॉनिसिटी कितनी है और कब हमारे पास पेशेंट आता है, साथ में को एग्जिस्टिंग के प्रॉब्लम्स हैं क्या, उसके ऊपर. तो कुछ पेशेंट्स को उतना इफेक्ट नहीं भी आ सकता है तुरंत, तो उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना. और इफ नीडेड वी मे गिव सर्टेन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स अलोंग विद दैट to obtain better results. Understanding prospects and limitations is the next point. We have used marmas in many cases, many different varieties, but there are certain limitations. It's not that somebody comes with a crush injury and we do only the marmas. It's not like that. We will need to take the help of an orthopedic surgeon. So जहाँ पे भी हमारे limitations हैं, we can adapt to it or we can accept it. But there are many cases in which with different types we have used marmas, and so we share those experiences. So general principles हैं, treat a patient as you would like yourself to be treated. I always tell my students कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमें हॉस्पिटल जा करके दिखाने गए तो हमें जैसा लगता है कि हमें ट्रीटमेंट होना चाहिए, वैसे ही ट्रीटमेंट हमें अपने पेशेंट पे भी करना चाहिए. Patient should be placed in a lying down on sitting position. Fingernails should be cut. Do not give pressure using any wooden objects. हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह यूज नहीं करते हैं. There are people who are using wood. हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर रहे हैं. There are people who are using wood with good effect. But हम जो
बताते हैं जो तरीका, जिस तरीके से, उसमें हम लोग कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं मर्म का, वी यूज आवर हैंड्स। सुश्रुत ने भी कहा है कि हमारे हैंड्स जो है वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि मर्म को कई तरीके से स्टिमुलेट किया जाता है। सिंपल मेडिटेशन से भी मर्म स्टिमुलेट होते हैं, सिंपल प्राणायाम से भी मर्म स्टिमुलेट होते हैं, कई योगिक प्रैक्टिस आसनास में मर्म स्टिमुलेट होते हैं। It can be used in conjunction with other pathies. Wear a slipper or stand on a wooden floor while doing it. Do consider ourselves as a learner at all stages. Avoid addictions or non-vegetarian diet. The practitioner can stimulate marma in sitting or standing position. Keep a close watch on the vitals of the patient. Observe facial expression while stimulating the marma. Do not talk while stimulating the marma. Side and distances are measured in angle pramana. Some marmas are better done empty stomach, but not all. Technique of marma stimulation, rate, rhythm, pressure varies as per the type of marma, patient's disease condition, prakriti, sattva, age, etc. Yeah, thank you. Thank you for patient hearing. And yes, if there are any queries, I can take up the queries now. अब आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप ये प्रश्न पूछ लीजिए सर से। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? सर एक बार वो रिपीट कर देंगे, जो आप एल्बो के पास जो पॉइंट था उसको किस साइड अपवर्ड करना, डाउनवर्ड करना, वो थोड़ा सा नहीं समझ में है सर। ओके, अगर इस तरीके से एल्बो में ये एल्बो क्रीज, इसको लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एल्बो क्रीज हो गया, ठीक है। अब इससे अगर ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंटी मिड लाइन, इससे करीब 3 फिंगर ब्रेड्स साइड में, और इस एल्बो क्रीज जो ड्रॉ किया उससे 1 फिंगर ब्रेड नीचे की तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन मीडियल साइड का। जब एक बार हमने ये पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन मीडियल साइड का समझ लिया कि ये पॉइंट है, तो हमें अपने हाथ को ये जो इलेक्ट्रोनॉन, ये जो बोनी प्रोमिनेंस है, इसके पीछे तरफ ऐसे रखना है, बहुत पीछे भी नहीं रखना है, बस ये जो प्रोमिनेंस है उसके पीछे हमारा हाथ रखना चाहिए। फिर थंब उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब जब थंब इस पोजीशन पे पहुंच गया तो यहां से एक इमेजिन करना चाहिए लाइन टुवर्ड्स दिस बोनी प्रोमिनेंट। तो यहां से इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका मीडियल साइड का सेल्फ स्टिमुलेशन का। तो यहां से डायरेक्शन प्रेशर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनॉन, है ना, इस तरीके से गया। यही प्रेशर अगर आप ऊपर की तरफ लगाने लगे, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब सेम पॉइंट से उतना इफेक्ट नहीं आता है। अब ये तो इनर साइड का हो गया। अगर यही चीज आउटर साइड का करना है, लेटरल एस्पेक्ट करना है, तो इस हाथ को, ये थंब को, ये जो बोनी प्रोमिनेंट है इसके ऊपर रखना है और 2 फिंगर आगे की तरफ बढ़ाना है ना। अब ये पॉइंट है, यहां से एंगल बनाना है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोन, यहां से इस तरीके से प्रेशर लगाना है, ठीक है। तो मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रेशर जो है वो इधर जा रहा है ना। तो यही चीज है। अगर आप, आई होप दिस इज मोर क्लियर टू यू नाउ। यस सर, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। सर आई ट्राइड दिस, आपने अभी दिखाया करके, तो मैंने ट्राई किया, आई हैड पेन हियर, सो व्हाट डज इट मीन? It means that you are at the right spot. सॉरी सर? क्योंकि it means that you are at the right spot. अगर आपने प्रेस किया, टेंडरनेस फील हो रहा है ऐसे करने पे, तो दैट होता क्या है कि जो ऑन द मीडियल साइड क्वाइट क्लोज इज द अल्नर नर्व, और जो आउटर साइड में इसी के पास में रेडियल नर्व है ना। तो चूंकि ये नर्व क्लोज बाय है इसके, इसलिए यहाँ प्रेस करने से टेंडरनेस फील होती है।
सिमिलरली ये नर्व जो है इस साइड से है, जो गया है अल्नर नर्व, वो क्वाइट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इसके हैं, तो इसीलिए जब यहाँ भी प्रेस करेंगे तो टेंडरनेस फील होती है। Okay, sir. Thank you. Yeah. And can सर you आई हैव वन क्वेश्चन मोर कि सर एक क्लाइंट है मेरी, उनको दाहिने तरफ, दाहिने मतलब राइट साइड पूरे बॉडी में ना कुछ रहता है, फिंगर में भी, और दाहिने साइड में ही किडनी में स्टोन भी है, तो उसको कोई पॉइंट से हम क्योर कर सकते हैं? किडनी में स्टोन में हमने मर्म किया नहीं, तो इसलिए हम कह नहीं सकते, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था उसका पहला? मतलब राइट साइड पूरी बॉडी में दर्द भी रहता है, सर में भी दर्द, इस हैंड की फिंगर्स में भी कुछ कट आवाज आती है, और राइट लेग में भी कुछ ना कुछ उनको लगता है दर्द। तो फिर तो आपको पहले तो उनका हेड का एक सीटी स्कैन या एमआरआई का देखना पड़ेगा कि वहां पे प्रॉब्लम, और दूसरा एक हाइपरटेंशन है कि नहीं है ये देखना होगा। अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप हेड के मार्मर्स हैं और ये जो सर्वाइकल के सीक्वेंस हैं वो उसमें पेशेंट में कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू रूल आउट विद सर्टेन CNS पैथोलॉजी, क्योंकि वन साइडेड उसको हो क्यों रहा है, या उसको प्रीवियस बैकग्राउंड या प्रीवियस सच हिस्ट्री रहा है कि नहीं रहा है, ये भी आपको देखना होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। Hariom, sir, I want to ask you one thing, that if any patient is having heart blockage and other patient is for paralysis, what to do with them? अगर पेशेंट पैरालिसिस के हैं तो पैरालिसिस का कौन सा कॉज है सबसे पहले तो ये देखना है ना। और पैरालिसिस कौन सा, वन साइडेड, बोथ साइडेड, बिलो मतलब केवल पैर का है, या फिर कौन सा पैरालिसिस, फेशियल नर्व पैरालिसिस है, ब्रेकियल अर्ब्स पैरालिसिस है, अलग अलग टाइप के पैरालिसिस हैं। तो किस टाइप के पैरालिसिस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा मर्म करेंगे। हाँ, कई जैसे फेशियल नर्व पैरालिसिस है तो उसमें हम लोग करते हैं मर्म का, बहुत अच्छा इफेक्ट भी आता है। हेमीपैरेसिस, जैसे किसी को हेमीप्लेजिया हुआ, कोई सेंट्रल स्ट्रोक, CVA सेरेब्रोवैस्कुलर कोई इन्फार्क्ट हुआ जिसके बाद उसको हेमीप्लेजिया हो गया, बट आफ्टर दैट हेमीप्लेजिया के बाद उसको रेसिडुअल हेमीपैरेसिस रह गया, तो एक साइड हाथ या पैर नहीं काम कर रहा है, तो वैसे केसेस में भी हम लोगों ने मर्म को किया है। और कितना उसमें इफेक्ट आएगा विल डिपेंड अपॉन द क्रॉनिसिटी, लेकिन हम लोग हेमीपैरेसिस पेशेंट्स में बहुत अच्छे सारे पेशेंट्स हैं जो कि कई उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और रेंज ऑफ मूवमेंट हम लोग बढ़ा सके हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी क्रॉनिसिटी कितनी है, किसका कोई एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी। जैसे अब एक पेशेंट था जिसको कि सर्वाइकल नेक ट्रॉमा हुआ और वो फ्रैक्चर होने के बाद ये सर्वाइकल नेक में फ्रैक्चर हो गया तो उसको प्लेट डाला गया उसमें, और प्लेट डालने के बाद में हाथ भी नहीं काम करता, पैर भी नहीं काम करता, तो करीब 8 महीने हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, तो कम से कम उसका अपर लिम्ब का रेंज ऑफ मूवमेंट हम लोग वापस काफी हद तक ले आए थे। हालांकि लोअर लिम्ब का हम लोग बिल्कुल नहीं ला पाए उसको, बट ही वाज स्टिल इन व्हीलचेयर, बट एटलीस्ट उसको राइटिंग लिखने लगा था। बट ऑफ कोर्स वो भी 8 महीने ट्रीटमेंट किया तब जा करके, और केवल मर्म नहीं, साथ में तो कुछ पंचकर्म के, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी फॉलो किए। तो कौन सा पैरालिसिस है, किस तरीके का, कहाँ का है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट दे पाएंगे। And what about, sir, heart blockages, who have heart blockages? हार्ट ब्लॉकेजेस में हम लोग जो मर्म करते हैं वो सिर्फ हृदय मर्म को करते हैं हम लोग। एक पेपर पब्लिश हुआ था, इफेक्ट ऑफ मर्मोथेरेपी इन स्ट्रोक, और ये एक लंदन में पेपर पब्लिश हुआ था। तो उन लोगों ने पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स पे मर्मर्स का इफेक्ट, मर्मर्स थेरेपी की थी। हालांकि उन्होंने ये उसमें कुछ मेंशन नहीं किया कि उसमें क्या बेनिफिशियल था, इफेक्ट आया या नॉन बेनिफिशियल, बट एटलीस्ट इट शोड, वो पेपर जो पब्लिश हुआ वो ये शो किया कि स्ट्रोक पेशेंट्स में भी मर्म थेरेपी की जा सकती है ना। और जो कार्डियक पेशेंट्स हैं वैसे पेशेंट्स में सिंपल टच सेंसेशन वाला जो हम लोग करते हैं मर्म का, हृदय मर्म को स्टिमुलेट करने का, वो किया जा सकता है। पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स में भी
हम लोग करते हैं, but that has to be especially with these I mean you have to be very not in the beginning of doing the Marma practices, later on when you are used to other Marma stimulations, then gradually you can use in heart cardiac patients as well. सर थायराइडिज्म के लिए थायराइड्स के लिए भी कुछ नेक के मर्मस करते हैं, स्पेशली जो नीला मण्य और सिरा मात्रिका मर्म है, ये मर्म को हम लोग थायराइड के पेशेंट्स में बताते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि जितने लोग हैं इनके समस्त प्रश्नों का उत्तर इन्हें प्राप्त हो चुका है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब के भी माध्यम से इस वीडियो को आगे देखेंगे, तो उनका भी प्रश्न हम तक पहुंचेगा और निसंदेह मैं उन प्रश्नों को आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती रही सर, और बहुत सारे प्रश्न अभी मेरे को व्यक्तिगत भी आ रहे थे। तो अच्छा है सर, ये कुछ लोग हैं हमारे जो योग से जुड़े हुए हैं और अनवरत सुनते रहते हैं। लगातार कोशिशें हैं हमारी कि समाज में एक जागृति अभियान चलता रहे, और निसंदेह यदि संभावित होगा सर, तो हम लोग एक मर्म चिकित्सा पे शॉर्ट टर्म 2 या 4 दिन या 5 दिन, जितने दिन का आप उचित समझें, एक कोर्स रखते हैं भविष्य में, और इन लोगों को आमंत्रित किया जाए ताकि ये लोग भी मर्म चिकित्सा के विषय में थोड़ी गूढ़ता से ज्ञान ले सके। मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं इन लोगों के माध्यम से मैं भी बहुत कुछ सीख जाता हूँ। अभी जितनी बातें आपने बताई, उन बातों को अनवरत मैं लिख रहा था अपनी डायरी में। हमेशा ये डायरी सर साथ ही रखता हूँ मैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि माध्यम कोई हो और मैं भी थोड़ा बहुत सीखते रहता हूँ। तो ये सब आप लोगों का प्रताप है जो आगे की भविष्य के भावी पीढ़ियों के लिए बड़ा उत्कृष्ट विनियोजन करने वाला है। बहुत बहुत आभार सर। आज की उपस्थिति हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी सर।